Namaste. Welcome. Welcome to the viewers of Gyan Darshan channel. I am Eshala Vamsi Krishna. I am Assistant Director, presently working in E-Governance Cell, Ministry of Corporate Affairs. Today, I'll be taking a session on MCA21 project, MCA21 portal, and how Ministry of Corporate Affairs is providing e-governance related services to citizenry, businesses, industry, and stakeholders in our country. So let us first try to understand why do we need e-governance projects. So what is e-governance? First, let us understand what is governance. So governance is the basic way in which a state is providing its services. For our short understanding for this presentation, let us understand governance in this way. Governance is the way state is providing its services to its citizenry, and whatever processes help in governance, that should be taken up for providing better services. So in this aspect, e-governance is very important. E-governance is a tool which uses digital and information technologies to provide better services to the citizenry. So why do we need such e-governance projects? What happens when we implement such e-governance projects like MCA21? So MCA21 e-governance projects will definitely improve the quality of the services provided by the state to its citizenry. At the same time, it puts the bargaining power back into the hands of the citizenry. You may ask how. So if you take the earlier paper-based system, the citizen is at a huge disadvantage. He is at a disadvantage of knowledge asymmetry. He does not know how the process has to be taken up. He does not know what services are provided. He does not know where he has to go to get the services delivered. But once the system is digitized, the information can be easily accessed by any citizenry. Any man or woman of this country can access such information if they are literate and if they are having the basic skills of operating a computer. Also, the information and services are ubiquitous. Without e-governance projects, citizens may have to go to some other place where offices are located. Lot of citizenry who are differently abled may not reach offices physically. In this way, e-governance also helps in improving the ubiquity of service delivery. At the same time, it ushers an era of transparency and accountability. Now, it is clearly known who is accountable and how any officer or official is held to get services delivered from him. Also, it improves the interface between business and industry and government. For example, using e-governance, businesses know real time where the services have to be improved, and they can ask using the accountability that is provided right now to the government and get the services delivered. So now that we have established how significant e-governance projects are, let us see how MCA21 is critical and how MCA21 project is helping in this e-governance dream that Government of India has provided to its citizens. MCA21 is a successful mission mode project. MCA21 has been taken up as a successful mission mode project under National E-Governance Plan. It has been a live model for conversion of a paper-based system into a paperless system on the basis of digital and informational technologies. Also, MCA21 portal is using latest technologies. That is the reason right now we are in version 3. Yes,
MCA21 has passed through 3 versions. It started with version 1 in 2006, a version 2 in 2017, and a version 3. In 2017, version 2 was rolled out, and right now we are in version 3, in which part of the modules have already been launched in version 3, and the remaining parts are to be launched very soon. So now, before moving on, let us see under what acts are these is MCA21 project operating. What is the act that is governing the filings and compliances done under MCA21? We have already talked about the significance of e-governance projects and how significant is MCA21 project and how it started. Now let us see what happens on MCA21 and under what acts does MCA21 operate. MCA21 operates under the filings under MCA21 operates under Companies Act and LLP Act. So these are the two acts that are governing all the compliance related activities that are undertaken in MCA21 portal. So where are we operating? Now, where does this MCA21 portal, on which offices does this operate? For this, you can, as shown in the slide, you can see there are various ROC offices. These are Registrar of Company offices. There are various offices situated in various states in our country. And MCA21 project is implemented in 7 regional directorate offices. There are 7 zones. As you can see, we have a northern zone based in Delhi. We have a northwestern regional directorate zone based in Ahmedabad. We have a western regional directorate zone based in Mumbai. We have a southeast regional zone based in Hyderabad. We have a southern zone based in Chennai. And we have an eastern zone based in Calcutta, and we have a northeastern zone. So across these 7 regional directorate offices, across the various ROC offices of the country, and also in the MCA headquarters and DGCOA office, that is Director General Corporate Office, situated in New Delhi, MCA21 is implemented. It is also implemented in OL offices across India. OL offices, that is official liquidator offices across India. So this earlier, the citizens who used to approach these offices to get their services delivered, right now they can get these services delivered at the click of the button of their computer. If we see, there are various functions that e-governance cell through MCA21 project is providing. The first and important service that e-governance cell provides through MCA21 portal is implementation and operations of MCA21 project for administration of Companies Act and LLP Act. So in the implementation and operations, we also cover the day-to-day problems that citizenry face, and because there is high criticality of the e-governance project MCA21, which I'll discuss in the next slides, we can understand how critical the project is and how difficult and challenging the implementation and operations of this project has. Also, as a process of governance process reengineering, as a part of governance process reengineering, GPR, e-governance cell, Ministry of Corporate Affairs has launched 2 centers that they are Central Registration Center, CRC, and Central Scrutiny Center, CSC. So monitoring of these 2 centers, Central Registration Center and Central Scrutiny Center, is also a part of e-governance cell. So along with this, e-governance cell talks with various stakeholders, businesses, industry, citizenry, other ministries, other intergovernment, with state governments, and within government to facilitate the initiatives which usher in and which bring in ease of doing businesses.
Apart from this, e-governance cell also has various miscellaneous functions. So, uh, e-governance cell, as part of MCA21, has this kind of governance structure. It is The e-governance cell is presently headed by Sri Manoj Pandey sir. He is the Joint Secretary in Ministry of Corporate Affairs, and you can see there are various heads of how e-governance cell is operationalizing MCA21 project. Presently, the service provider, the implementer is LTI, and MCA is also assisted by project monitoring unit provided by NISG, and the PMU assists MCA e-governance cell in implementation and operationalizing of this project. So let us see the journey of this MCA21 project in chronology. Let us see how the project has started and where the project has reached. So in 2000, the project before 2006, the filing was done physically. That is, it was a paper-based system. And in paper-based system, what happens is the service, any citizen, if he has to get any services, that is, if he wants to do any company filing, he has to reach the office, and on via paper, he has to provide his whatever compliances he has to do. For example, if he has to do annual related filing or annual filing, so he has to reach the company, he has to reach the office, and the company's filing he has to submit physically. So that was pre 2006. So in 2006, as we've already discussed, MCA21 was launched, and as part of National E-Governance Plan, it was taken up as a mission mode project, and it was implemented. It started with TCS, Tata Consultancy Services. So they were the first service providers for the version 1, and there were 2 pilots that were launched in 2006. So the first one was launched in 18 February in Coimbatore, and the second one was launched in Delhi in 18 March. So after these 2 pilots, and after these 2 pilots which became successful, then on 30th July 2006, the project MCA21 was rolled out nationwide. So now we started this MCA21, where now right after the V1 launch, now the stakeholders or citizenry, they don't have to come to office and do all the physical filings. Now at the click of the button, they can do the e-filings. And in 16 September 2006, all the e-filing was mandated by law. So all the e-forms that are being filed right now, they are mandated by law. So this is how we started the journey. This is a crucial point. The year 2006 is a crucial point. So 2006 has made the paper-based system, has initiated the conversion into paperless system, and it is a very important milestone in MCA21 journey. And the LLP Act, Limited Liability Partnership Act 2008, was changed. Was enacted in 2009, and it got implemented in 2009, the LLP Act 2008, and that was also slowly it came under part of MCA21 project, because it was in the meanwhile it was taken over by NIC, and then it came into overtaken by TCS. And after this, we had the version 2 of MCA21. The version 2 of MCA21 was taken by Infosys, and as you can see on the slide, the rollout of the V2 portal for company services in 2016 was done by Infosys. So at the right side, you can see the ease of doing business initiatives taken by Ministry of Corporate Affairs under MCA21, and the left side shows the milestones that we have crossed till now.
Another important milestone in the journey after the enactment of LLP Act in 2009 was the Companies Act 2013, which was the new Companies Act that came superseding the Companies Act 1956. So when version 1 was in place, the filing was done under Companies Act 1956. But after the rollout of version 2, the Companies Act 2013, all the compliance services were under Companies Act 2013. So if we see the V2 portal, even though the transition has been given to Infosys, it has taken certain time from 2013 to 2016 for the Infosys to develop the portal and launch the portal. Because the technology has changed. Infosys was a SAP-based system, and various new additional facilities and services were brought into the V2 system, and because of that reason it has taken some time, and in 2016 the V2 portal was launched. After that, in 2020, LTI, for the implementation of version 3, LTI was provided. LTI was selected as a service provider, and LTI has taken over from Infosys on July 2020. And right now we have in version 3, in 24th May, on 24th May, we have implemented some modules which we will discuss in detail in the future slides. And the first phase has been launched, and part of the company module is also launched, which we'll discuss further, the details which we'll discuss further. And some of the modules will be launched very soon. So you can see on the left side of the slide the remaining the modules that are launched, and on the right side, if you see the ease of doing business initiatives that are being taken, the two important I want to stress on two important aspects or two important points here. They are in 2016, as a first government process reengineering initiative, we have launched central registration. We have launched Central Registration Center, and that was launched. That started with providing companies' names initially on 26 Jan 2016, and that was extended for company incorporation on 28 March 2016. So how the process has happened and how the CRC has implemented, that will also be talked about in detail in the next slides. And that is a very important initiative taken up by Ministry of Corporate Affairs, and it is very useful for any citizenry. So that will be covered in detail in the next slides. Similarly, we have there is another GPR governance process reengineering initiative taken up by MCA, and that is Central Scrutiny Center, which will also be discussed in detail. As on 2021, we have also integrated MCA 21 with the National Single Window System, and this is a part of initiative of DPIIT of Ministry of Commerce, and yeah. So the major and important business areas of MCA 21, we have also seen it covers administration of Companies Act 1956 and 2013, and administration of Limited Liability Partnership Act 2008. So this we have already talked about in detail. So what are the other business areas of MCA 21? Let us go into these services. One is the incorporation services, that is the registration of any company or LLP is done right now under MCA 21 portal. Any director or any designated partner. So who are these directors? So director, any company, they require a minimum of 2 directors, and these are the people, they are the CEOs, and these are the persons who are operationalizing and working a company. So these directors, they have to register on the MCA 21 portal, and directors are allocated a DIN
that is director identification number. And in LLP, the same alternative parallel concept in LLP, limited liability partnership, is designated partner, DPs. So DINs and DPINs are also allocated, and they are the KYC process, etc., is also done on MCA21 portal. Similarly, as I've already talked about, annual filings which are done every once in a year, that event-based statutory filings are also done under MCA21 portal. Charge management. So charge management is also an important aspect which every citizen should know. So charge is basically the loans taken up by companies. So whatever loans taken up by companies from banks, this is shown under as charges in the portal. Similarly, we have an important functionality, VPD, which I'll discuss in detail in the next slides. VPD basically means view public documents. This has basically this is a very important service for the citizenry, because any citizen, if he wants to access some documents of the companies, where he wants to get the basic data of the companies. Right now, there is in the physical system, there was a lot of knowledge asymmetry. He had to, or she had to reach ROC offices, and the process was very cumbersome and was very time taking. So this is also an important functionality which we will discuss in detail in the next slides. Similarly, grievance redressal. Right now, for the filings and statutory filings related issues, we have a separate way of dealing those issues. And similarly, for any issues faced by the public, we also have a grievance redressal handle, which we will talk about in detail. IEPF, this is also an important business area. So IEPF is basically an agency, this agency which is encouraging and helping investors to educate and investors how they should invest properly. That is the domain area of IEPF, and to prevent fraudulent investment activities, how to educate the investors to not fall into the trap of fraudulent investment schemes. That is an important aspect of IPF. And also the information for the for the customer, the basic information, how to access the master data and how to use VPD, that we will discuss in the next slides, which will really help citizenry to get the basic information from the companies and invest properly in legitimate businesses. So already we have discussed about the journey of MCA21. We have talked about the two GPR initiatives taken up under MCA21. We also talked about how V1 has started and how it has moved from TCS to Infosys to present V3 under LTI. So the journey of MCA21 has been a remarkable and significant one, improving corporate governance in the country. So this journey, I want to give you a basic example of how this process has totally changed the citizen service delivery to the citizens. During pre-2006, prior to 2006, for annual filing related compliances, the lines before the queue before registrar of companies was running into hundreds of meters. It was running into hundreds of meters, and the stakeholders, for example, chartered accountants of the companies or company secretaries of the companies, they had to maintain the line, they have to follow the queue, and the process may have it would have taken many days actually to get the annual filing compliances done. But after the initiative, in the journey, if you see the journey, we started with hundreds of meters of queue, and now that journey, right now we are at that stage where the annual peak filing is handled very efficiently in MCA21 portal. There is no need to wait in the queue, and there is no need to the process is not even does not even take time. It is actually, the annual filing is actually instantaneous. It is a STP process, that is straight to process.
So in this way, the journey, if you see the journey, it started from hundreds of meters of queue to there no necessity of queue. Right now, if you see the grievance portal or grievance redressal mechanisms that MCA is providing, the help desk services which MCA is providing, it has shifted the bargaining power back to the stakeholders, back to the citizenry, and that is the right thing in the democracy, and that is the significance and criticality of the e-governance projects such as MCA 21. So in this MCA 21 journey, now we are, if you see the highlights of MCA 21, the incorporation, appointment of directors, annual filing, regular filings, and the closure of business. Everything, the end to end, the start and end. So, Ministry of Corporate Affairs has been working through MCA 21 portal as Brahma, Vishnu, Maheshwara for creation, for operationalizing and destruction, the three process, end-to-end life cycle of a company. The services are being provided under MCA 21 portal, and because such services are being provided, we have seen the improvement in ease of doing business rankings also, and we have seen the improvement in corporate governances, and that is clearly reflected in many foreign companies who want to set up businesses inside the country. It has hugely been beneficial and hugely been impacting very positively the business activity, corporate growth, and economic activity in the country. So such is the significance of MCA 21 project. So right now, till now we have discussed on various aspects, and in the next part we will be discussing about how MCA 21 has operationalized and the various FO services provided to the citizenry. क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग. ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास. उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी. राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी. 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए. हार्ट अटैक आया है. देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है. डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें. अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं. सावधान रहें, समझदार बने. IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी. हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है. पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या. सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो. साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा. हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने. नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें. आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें. नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ. ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें. ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं. IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी. यार वो मेरे बचपन का दोस्त है. वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे. और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000. एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ. अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे. जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता
कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। कैनवास में रंग भरकर उसे जीवित बना देना एक कला कहलाती है। इसी तरह अपनी जमा पूंजी बढ़ाकर जिंदगी बना लेना भी एक कला ही है। मैंने भी ये स्टूडियो ऐसे ही बनाया है, पाई पाई जमा करके। मुझे भी लोग फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, मुझे कन्विंस करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी है। उन लोगों के भी रेफरेंसेस देते हैं जिन्हें फ़ायदा हुआ है, पर मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ। आपको भी यही करना चाहिए। सरकार की कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप अपने निवेश से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबसाइट्स हैं मैं अपने पैसों को लेकर सावधान रहती हूँ, आप भी रहिए। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। Welcome back. Till now we have discussed about MCA21 project and its journey. We also talked about an important example of how lines are reduced and how citizen is provided better service delivery. Now let us see qualitatively the impact that has been created, and let us also see how quantities of filings and companies have increased, and how the service delivery's magnitude has increased. So if we see the impact of MCA21 project, it is quite evident on the screen. The name approval, which used to take almost 7 days, it has reduced to almost a single day. The same thing happened with company incorporations. From 15 days, it has been reduced almost to around a single day. And I myself have witnessed both the name approval and company incorporations in some cases taking place in just 2 or 3 hours. And that is the India presently we are living in, and that is the India which is providing top-notch and high-quality corporate governance and service delivery. Similarly, for annual return and balance sheet filings, the example which I have quoted, it used to take almost 60 days, that is 2 months, and right now the process is entirely instantaneous. It is a straight through process. Similarly, for change in directors, the process time has been reduced from 60 days to 1 day. And inspection of public documents, there is no need to visit any register of companies office, and right now the process is entirely online. We have seen the quality change. Now let us see the magnitude at which MCA21 is operating to determine how critical the MCA21 project is. So right now, if you see the number of active complaint companies, there are around the companies registered are around 23 lakh, and active complaint companies, they are around 7 to 8 lakhs. So
the registered companies, if you see, that is the scale at which MCA21 is operating right now. That is the scale at which India is producing companies. And if you see the number of services provided, there are around 30 to 35 services that right now are being provided under MCA21. And we have 97 company forms which are operationalized under MC21 project. We have around 65 lakh DINs, that is that is directors, and the approved DINs, that is directors who are compliant with all the compliances, are around 24 lakhs. So this is the magnitude, and this shows the criticality of MC21 project. And if you see the total filings through the system, this is the numbers are really huge. We have around 88 lakh filings. So you can see how many companies are being are working in our country. So this is the data from 2021 to 2022. Similarly, if you see the fee collected or number of annual returns filed and balance sheets filed, you can see this is the strength of Indian companies, and this is a strength which is boosting our economic activity. And that is the reason, that is one of the main reasons why India is is one of the top leading economies in our world. So right now the MCA21 portal has a registered users, which I'll explain in the next slides what is registered users and how citizens can get benefited by registering themselves on the MCA21 portal. So right now we have around 18 to 19 lakh registered users, and this is increasing, and this is going to increase as many more citizens get to know about their rights and get to know more about MCA21 portal. So we have talked about the quality of improvement. We have talked about the magnitude at which MC21 is working. Now let us talk about the quantitative aspect, which shows how MC21 has been influencing the rate of growth of companies in this country. So this graph basically shows how many active companies are there, and this graph shows the growth of number of companies, and this is a clear pattern of increase after 2015. We have the graph, and you can just see the magnitude of increase that is happening, and that is where the country is getting its economic power from. So this is a graph of directors, like how many approved directors we have, and how many are active, etc. So now we have reached to a very important aspect of MCA21 portal. So till now we talked on the impact and magnitude and the journey of MCA21 portal and established its significance and criticality in the Indian economy. Now let us talk about the very important aspect for the citizenry, that is how FO services are provided to the citizenry using this portal, and how a citizen can improve his knowledge on the companies. So this is an important aspect. So let's go through the FO services provided to a common citizenry one by one. So to enter into the portal, it is a very simple step. It is a very simple web ID we have. The ID is mca.gov.in. So by entering this ID, you can see the portal. This is the portal we have, and we can enter this portal. So we can see the various tabs which are present. That is, we have the home tab, we have my application tab, we have MCA services tab, and right now we will focus on the MCA services tab and help and FAQs tab, which are very important for common citizenry, and we'll focus this discussion on these two aspects. So if the cursor is moved over MCA services, you can see the various services that are provided to the citizenry, in which one of the important services is the master data services. So once the citizen enters rolls over the cursor towards the master data, we can see the various options that are provided. So the most important aspect is the view company or LLP master data.
So what is master data and what functions are provided, I will discuss. So there are some basic information that is necessary to establish whether a company is a legitimate business, or to establish at what magnitude the company is operating, and similarly to understand from where it is operating. So for the basic information such as who are the directors and what amount of loans the company has taken, this is important information every citizen should know before investing in any company. Similarly, if any undergraduate or graduate who wants to join a new company and he does not have any idea about what the company is, then definitely that undergraduate can use this master data services to understand what kind of company he is going to join in. And also for data research, or to understand which companies are growing or which companies are not growing, to get a basic idea on market, master data services can be used. So as shown earlier, once master data portal is entered into, MCA 21 requests company name or SIN to be entered. So I'll discuss what is SIN. So if a citizen does not know the company's SIN, he can just enter the name and he can select the company. He has to enter the characters shown, and he will be shown the basic details of the company. He will be the date of incorporation, the authorized capital, the paid up capital, that is the what money the owners or the promoters have put into the company. We can also see the charges, that is how much loan the company has taken from the banks. All the details are very clearly shown. We also see the directors. Similarly, we have in the MCA services, we have a tab for creating complaints. So now, similar to master data, we also can use DIN details to know more about the directors. That also will be talked about. But important aspect we will talk right now is on complaints. So there are various kind of complaints which you can launch. So a citizenry, suppose he has invested and he came to know about such information where a company is using fraudulent means of acquiring money or such related serious aspects. We have a serious complaint form provided in this complaints. Similarly, if he has any grievances, suppose a citizen wanted to establish a company and he has applied for a name and he couldn't get that name. So, and if he feels his request is genuine, he can also launch a complaint using our grievance redressal mechanism. And also we have other services in this complaint module. We also have a help and FAQ module, which I'll be showing in the next slides. In this, the various problems stakeholders or citizens are facing, they are very detailedly covered via written articles and videos under help and FAQs also. So let us, I'll show you our corporate Seva Kendra or help desk, where any stakeholders, if they have any problem related to filings, they can launch the ticket and launch a complaint. So this is the serious complaint form in which any complainant can launch his complaint, and this will be taken up by ROCs and wherever necessary by RDs also. So these are the complaints related to removal of director, or complaints of serious nature fraud, which I was talking earlier, and financial irregularities, etc. Similarly, we have the corporate Seva Kendra, the help desk, and this is the number. And we also, this is the number where if a citizen is not able to, or a stakeholder is not able to do the required statutory compliances, he can always write to this email ID, or this is the mobile number. And similarly, if they want to contact any officials, this is the contact us tab on the mca.gov.in, where he can use these tabs to call and to provide with an email. They can do this. This is the FAQ on e-filing, which I've already talked about. This is the to enter, we have to enter the help and FAQ tab on the MCA portal, and these are the basic issues that every stakeholder or most of the stakeholders generally face, and everything is detailedly covered in the e-filing. These are the numbers of the grievance cell of
headquarters ministry, and similarly you can get numbers of ROCs, register of companies, and RD, regional directorates also. Now let us see what the view public document, which is an important service provided to citizenry. So under the MCA services, document related services, there is view public documents. So before this, one has to get registered, and the registration is also very easy on the portal. You have to sign in, and you have to register. This is an important functionality. You are registered on the MCA portal, and you will have a separate application window which is useful to track, and which is useful for a user to access the services. And this is the way he can register. And once he enters the view public documents, it is very easy to enter the company name and the state of the company, and that will further lead to a payment gateway. Paying a basic amount, a citizen can get the filings of a company, and citizen can get the basic understanding of how the company is operating business if he is not satisfied with the information provided in master data. So in this way, MCA 21 has broken the knowledge asymmetry barrier, and it has provided not only master data at free of cost, it has also provided the view public document functionality. So right now there is no necessity to reach ROC office. The view public document functionality can be used from the comfort of your home. Also, sometimes you to submit in courts, or to submit in for some legal functionalities, companies may need certified copies. So we also have an option for getting certified copies, and that can also be accessed through MCA services. So these are the basic FO services that MCA 21 is providing. Now let us talk about the two important GPR initiatives that MCA 21 has taken, and these are very significant, and I'll talk in detail about them. The first one, that is Central Registration Center. Let us talk about Central Registration Center now. So Central Registration Center, it has started initially with name availability e-form, and then it has in the same year incorporation functionality has also been added. So earlier there was this INC 29 form in which DIN and incorporation services were provided. Later, SPICE was created to not only provide DIN and incorporation service, but also PAN. Now that has been further improved to include various functionalities. We have presently providing a bouquet of services which will be discussed. So right now, because of these functionalities, the name reservation and incorporation application we are getting just in 1 day after the date of payment, and this has resulted in speedier processing of incorporation related applications, in uniformity in application of rules, and eradicating discretion in the processing of such forms. We are also incorporating and registering around 700 companies and LLPs in a day, within 1 day on average. 800 plus name reservation applications of companies and LLPs are approved on daily basis on same day on average. Currently, the operational model is the dealing hands or the executives who are processing the form are recruited by Institute of Company Secretaries of India, as they have made an MOU with MCA, and there are 17 Indian Corporate Law Service officers who are posted in Central Registration Center, and these are the officers who are under whose name the approval is getting done. So the outcome of CRC initiative is very clear, and as we have discussed, it has clearly reduced the time to a single day right now, and you can just see the graph how the change has been done. Before CRC it was around 6 days for name reservation and 15 days for incorporation. Now that has reached almost to 1 to 2 days after CRC, and in many cases it has reached in
on a magnitude of number of hours. So this has also improved the ease of doing business because in the Spice Plus form, we have created a form where various services from various other ministries are also being provided to the citizenry who wants to incorporate and create a company. For example, we have ESIC, EPFO, GST, bank accounts getting created, PAN and TAN number being provided, etc. Shops and establishment, professional tax registration, all these are combined right now into the Spice Plus mix, and these are provided directly to the citizenry via filing just one form, that is Spice Plus. So for this, MCA had to integrate with the Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs are integrate with the Ministry of Labor and Department of Revenue, Ministry of Finance, 3 state governments and NCT Delhi. So we are providing presently 11 services offered by these different ministries and levels of government. Right now, it is saving a huge time and cost for startups and new businesses which are starting in the country. It has reduced the compliance cost by huge margins, and this is one of the reason why ease of doing business ranks has come from 140s to 60s in 2019. So these are the bouquet of services being provided at one go. DIN also is allotted. We have profession tax registration in 3 states, that is Maharashtra, West Bengal, and we have shop establishment also in NCT Delhi. You can even get the shop establishment permission registration through Spice Plus. The bank account opening is mandatory at present, and GSTN can be allotted if it is applied for. So this is an integrated web form, and we have reached at this stage. And if you see the new changes that are coming after the Spice Plus form in V3, if you see, I'll just give a brief idea about the important aspects that V3 is bringing into the picture. That is, we have a ebook right now which tracks all the important acts and rules changes that are being are being amended in Companies Act. And we also see we also have a new module, e-consultation module. E-consultation module is if any to invite public suggestions on proposed amendments or draft legislation. This is the module which citizenry can use. For this also, they have to get registered, as I have explained for the process of view public documents. They have to register, and they can provide their comments, and the comments can be tracked using AI/ML technology in version 3, and right suggestions will be provided to the lawmakers so that any law has more success because it has already been verified by the public. The scrutiny has already been done in these cases. Similarly, we have an e-adjudication module in MCA-21 V3. This module is very, very important because after the decriminalization of many sections under Companies Act, many of the companies, the fines they have to pay will be adjudicated by ROCs directly on online. So everything from the notices to the how much fine is levied and the payment of the fines, everything is covered in MCA-21 under e-adjudication module. Similarly, we have various technologies being implemented in MCA-21 V3, which I won't go in much detail, but I want to talk majorly about the data lake technology we are bringing in V3. So this is how you can it has the capability to capture the structured, it has the capability to capture the data, and also right now, because of lack of this technology, there are some downtime issues, there are some issues which citizenry is facing in the filing, but because of these technologies, citizenry has a better, stakeholders have a better service accessing facility. And as you can see, everything is being lot of new technologies and lot of cutting edge technologies are being brought in our version 3 of MCA-21, keeping in mind the significance and criticality of the project. These are very essential, and Ministry of Corporate Affairs has taken this step
in which the first part has already been launched, and we are bringing the remaining modules which are to be launched very soon. So as you can see, the new modules and functionalities that are being brought are, as I've explained, the e-adjudication module, the e-consultation module. Complaints management system is especially useful for stakeholders, because a lot of times because of negligence or because of lack of keeping track of the filings, some genuine stakeholders may forget to file certain forms, and CMS is very essential because it acts both as a reminder and also in helping to improve the complaints management. And AAML technology is used in V3 so that MCA, Ministry of Corporate Affairs, has the power to understand and analyze the data, the huge volume of data that is being filed by the companies, to take preventive action wherever fraudulent activities are occurring, and also help other regulators to capture or to catch the wrongdoers, so that a honest businessman, a honest stakeholder is saved and is also incentivized to be honest. So this slide clearly shows the initiatives which we have taken, and this is very important analytical. It has very important analytical capabilities. So we right now are launching web forms, and on this note, I want to end this session, and I hope the session was very useful. Let us just recap in a minute what we have covered. We have understood what is governance initiative, what is an e-governance initiative, what is MCA 21, how it is operationalized, what is the importance of e-governance cell operationalizing MCA 21 project, the criticality, significance, the quality and the magnitude of MCA 21 project, how the project is getting updated by using latest technologies, how we have reached V3 and the functionalities in V3, and also we have covered about important functionalities provided at FO level, that is front office level, to users. Thank you. ये किया है कि आज़ादी की लड़ाई के कुछ प्रसंग हैं जिनको मैंने छंदों में ढाल दिया है, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ये जान सके कि आज़ादी की लड़ाई में किस तरह के जज्बात थे, किस तरह की कुर्बानियाँ दी गईं। तो मैंने कुछ घटनाएं हैं उनको छंद में बांधा है कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था, पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। तो ये बिल्कुल सच्ची घटना थी जिसको मैंने अपने छंद में ढाला। दूसरी घटना ये है कि हमारे जो नामधारी सिखों को ब्रिटिश फौज ने जो है वो तोपों से बांध के उड़ा दिया। तो ये सुनेगा कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए, कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। तो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं, तो आप सुनिएगा कि सिर्फ एक ख्वाहिश है कहा नामधारियों ने, विनती है आपसे करम फरमाइए। क्या विनती सुनेगा
कि बिनती है आपसे करम फरमाइए, कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए, और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दें हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। तो एक तो ये घटना थी, और एक नाज़रीन इकराम, आज आपके रूबरू एक अहम मौजू सौदा की गज़लगोई की खुसूसियात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इकराम, आप जानते होंगे कि सौदा 18वीं सदी की एक अहम शायर हैं। अपने अहद में उन्होंने खूब शोहरत हासिल किया, लेकिन उनकी ये शोहरत गज़लगोई के बजाय कसीदा गोई के ज़रिए से हुई। ये इत्तिफ़ाक़ है और ये यकीनन वो साहिब कमाल शायर है जिसने मुख्तलिफ़ असनाफ़ शेर पर तबाज़माई की। उसने गज़ल भी कहा, मरसिये भी कहे और मुख्तलिफ़ दीगर असनाफ़ वग़ैरह पर तबाज़माई की। लेकिन जो सौदा की इनफ़रादियत कायम होती है, जो शनाख्त कायम होती है और जो मकबूलियत का सबब बनता है, वो उनकी कसीदा गोई है। लेकिन आज हम यहाँ पर उनकी गज़ल गोई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और गज़ल गोई की अहमियत और इफ़ादियत को वाज़ेह करेंगे कि सौदा की गज़ल गोई किस नौ की है, सौदा ने किस तर्ज़ पर अपनी गज़ल गोई को पेश किया और क्या असबाब रहे कि कसीदे की वजह से कि उनकी गज़ल गोई दब गई या गज़ल गोई में वो मानवियत नहीं थी। ये इश्तिबा आम तौर पर आज भी है कि उनकी कसीदा गोई की वजह से उनकी गज़ल गोई पे वो तवज्जो नहीं दी गई या वो खातिर ख्वाह का ये जो है पजीराई नहीं हुई जो उनके कसीदे की हुई। तो नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलते हैं कि सौदा जो हैं मुख्तलिफ़ असनाफ़ शेर पर तबाज़माई की और हमा जो है सलाहियतों के मालिक थे, उनका शुमार उर्दू के नामवर शुआरा में होता है। यूँ तो उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ शेर में तबाज़माई की, लेकिन उनकी शुहरत कसीदा गोई से हुई। कसीदे के मैदान में उनका कोई हमसर नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। उन्होंने उर्दू कसीदों को फ़ारसी कसीदों के मुकाबिल कर दिया। कसीदा निगारी की मकबूलियत की वजह से उनकी गज़लें वो मकाम शोहरत हासिल न कर सकीं जिसका वो हक़दार थीं। एक बात यहाँ तक वाज़ेह हो जाती है। लेकिन जब हम गज़ल की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी गज़लें भी संगमील की हैसियत रखती हैं। उन्होंने इहाम गोई और यकरुखेपन से अपनी गज़लों को आज़ाद किया। उनकी गज़लें रंगारंग और मखसूस लब व लहजे की वजह से मुआसरीन से बिल्कुल मुनफरिद हैं और इस तरीके से इनफरादियत की हामिल है कि मुआसरीन में उस ज़मीन में जो ज़मीनें उन्होंने इख्तियार की हैं या जिन ज़मीनों में उन्होंने कलाम कहा है, वो कलाम उनके मुआसरीन में बहुत कम लोगों ने कहा है। तो ये उनकी इनफरादियत है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी गज़लों का रंग व आहंग उनके कसीदों से बहुत करीब है, यानी उनकी गज़लों में कसीदों जैसा ज़ोर बयान और नुदरत बयान पाया जाता है। ये चूँकि कसीदे उन्होंने ज़्यादातर कहे और कसीदे के असरात उन पर रहे, उनकी ज़हनियत भी कसीदा गोई की तरफ मायल रही, लिहाजा इसीलिए उनकी गज़लों में भी कसीदों जैसा आहंग मिलता है
और ये आहंग इस तरीके का है कि बाज़ मर्तबा ये मुश्किल हो जाता है और फ़र्क करना ये जो है बहुत दुश्वार हो जाता है कि ये आया कसीदे का शेर है या गज़ल का शेर है। अगर शेर को अलग कर दिया जाए तो अंदाज़ा नहीं होता, क्यों? इसलिए कि आहंग उनका उसी तरीके से। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अपने क़ादिरुल कलामी के हवाले से एक बात कही थी कि ज़ेबस रंगीन ये मानी मेरी आलम में फैली है, ज़ेबस रंगीन ये मानी मेरी आलम में फैली है, सुखन जिस रंग का देखोगे मैं भी उनमें शामिल हूँ। ये दावा था उनका, और यकीनन वो दावे के एतबार से पूरे भी उतरे, और इस तर्ज पर पूरे का ये जो है पूरे उतरे कि हर रंग में हर किस्म के मज़ामीन को उन्होंने अपने गज़ल गोई में पेश किया। ये उनकी इनफरादियत है और ये उनकी शनाख्त है। चूँकि ज़्यादातर कसीदे कहे और कसीदा गोई उनका असल मैदान था। कसीदा गोई में हुजूर का नाम हाजू में तो वो माहिर थे। उनकी रिवायत मशहूर है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में लिखा है कि उनका एक ग़ुलाम था, नौकर था, जिसका नाम था गुंचा। जब वो किसी से खफा हो जाते थे या तबीयत उनकी मुकद्दर हो जाती थी तो आवाज़ देते थे, गुंचा दावत और कलम ला, और फिर उसको बुराई शुरू कर देते थे, यानी हज लिखना शुरू कर देते थे। और यह उनका कमाल था। और जो हज लिखते थे वो इस कदर लिखते थे कि फिर वो उसकी पजीराई के बजाय का मतलब उसकी तजलील हो जाती थी। तो सौदा इस कदर अपनी सुखनगोई में मशहूर व मारूफ थे। तो सामईन किराम, जैसा कि मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उनकी गज़ल गोई की इनफरादियत आज भी मुसल्लम है। यह अलग मसला है कि कसीदे के बनिस्बत उनका नाम उसकी पजीराई यानी गज़ल गोई की पजीराई नहीं हुई, लेकिन उसकी कदर व कीमत पर किसी तरीके से हम कलाम नहीं कर सकते हैं। जब हम गौर करेंगे और उनकी खसूसियात को देखेंगे तो यकीनन हमें उनकी ज़िंदगी में 3 तरह का नाम पैगाम मिलेगा, यानी 3 तरह की हमें ये जो है गज़ल गोई मिलेगी। एक तो इब्तदाई दौर की गज़ल गोई है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो इहाम की तरफ ज़्यादा तबीयत उनकी माइल थी। उनकी रंगीन यमानी उनकी गज़लों की सबसे बुनियादी खसूसियत है। उनमें लिसानी और फ़िक्री का सीरुलजहती इर्तिक़ा पज़ीर है। उनकी बाज़ गज़लें इहाम गोई का बेहतरीन नमूना हैं। इहाम पर मबनी गज़ल के अशार में फ़ारसी मुहावरे और दक्कनी असरात नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। इस नौ की गज़लों को नाक़िदीन सौदा ने पहले दौर की यादगार बताया है। दूसरे दौर में उनकी गज़लों में मज़मून आफरीनी, नित नई पैकर तराशी, निराले और अनोखे बागपन के साथ मज़मून पैदा करने का रुझान उनमें आम था। जाहिद, शेख और वाइस पर तंज़ भी खूब मिलता है। इस दौर में ज़बान की सफाई, रोज़मर्रा की चाशनी, शिस्तगी, रवानी बदरज अतम उनकी गज़लों में पाई जाती है। कलाम में हुनरमंदी का ख़ास एहतिमाम मिलता है। आखिरी दौर की गज़ल गोई में पुख्तगी और ख़ुद एतमादी ज़्यादा पाई जाती है। रियायत लफ्ज़ी, मज़मून आफरीनी, मानी आफरीनी और सन्नाई वग़ैरह के ज़रिए उनकी गज़लें लखनवी रंग सुखन की याद ताज़ा करती हैं। ये बिल्कुल हकीकत है कि लखनवी रंग सुखन उनके यहाँ गालिब है। क्यों? इसलिए कि वो दिल्ली में भी रहे, लखनऊ में वो ये जो है दिल्ली में भी रहे और फैज़ाबाद में रहे और फिर लखनऊ में रहे। तो 3 जगहों पर ज़मान व मकान के जो सियासी और समाजी तस्वुरात थे और जो तब्दीलियाँ थी वो ज़हनी तौर पर यानी फ़ितरी तौर पर उनके ज़हन पर मुरतब हुई। तो उससे उनके कलाम ये जो है उससे उनका कलाम भी मुतासिर हुआ। तो इसलिए जब हम देखेंगे तो तीन दौर को देखेंगे। 3 दौर में उन्होंने जो शायरी की है वो इर्तिक़ा पज़ीरी की तरफ है। कसीर ये जो है लिसानी उसके अंदर इर्तिक़ा नज़र आता है। और जब हम उनकी कलाम ये खसूसियात कलाम की तरफ हम जाएंगे तो बाज़ाब्ता तौर पे वाज़े होगा कि जो कलाम है उनका, जैसे मज़मून आफरीनी, मानी आफरीनी, ख़याल बंदी, ज़ोर बयान, शिद्दत बयान, ये इनके कलाम की बुनियादी खसूसियत है। और ये ऐसी खसूसियत नहीं है बल्कि ये असरात उनके कसीदों पर भी पड़े हैं और कसीदों के साथ साथ उनकी तमाम ये जो है असनाफ़ शेर पर ये असरात मुरतब हुए हैं। यह सौदा का कमाल है। लेकिन सौदा का कमाल ये है कि कहीं पर इब्तिज़ाल पैदा नहीं होने देते हैं अपनी गज़लों में, और कहीं पर भी वो अपनी गज़लों में इन्हिताती सूरत, कुनूतियत की शक्ल पैदा नहीं होने देते हैं, बल्कि निशातिया लहज़ा इख्तियार करते हैं। उनके यहाँ वारदात क़ल्बिया नहीं हैं, बल्कि उनके यहाँ क्या है, ज़िंदगी के मुशाहिदे की जो ज़िंदगी में जो मुशाहिदे हैं, जो तग़य्युरात है, यानी उनके गज़ल गोई जग बीती कही जा सकती है।
नाजरीन, अब आइए हम उनकी खसूसियात की तरफ बढ़ते हैं। तो खसूसियात की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो नंबर 1 ये है कि सौदा की गज़लों में इश्क मजाजी के तहत जो है बहुत से मज़ामीन मिलते हैं, यानी इश्क मजाजी के ऊपर उन्होंने बहुत से मज़ामीन कहे हैं। मसलन गम इश्क, मामला बंदी, या इसी तरीके से वारदात मोहब्बत की और माशूक से छेड़छाड़ के बहुत जैसे का नाम इस तरह के इस नौ के बहुत से मज़ामीन उनकी गज़लों में मिलते हैं। और इन गज़लों में ज़ोर तब और जोश बयान खूब मिलता है। वारफ्तगी ये इश्क और गम इश्क के बयान में उनका मखसूस रंग उभर कर सामने आता है। अब बहुत सी मिसालें हैं, कुछ मिसालें हम आपके सामने पेश करेंगे। ज़ालिम मैं कह रहा हूँ कि तू इस खून से दरगुज़र। अब अंदाज़ देखिए और बयान देखिए। ज़ालिम मैं कह रहा हूँ कि तू इस खून से दरगुज़र, सौदा का कत्ल है ये छुपाया न जाएगा। सौदा का कत्ल है ये छुपाया न जाएगा। कासिदे अश्क आके ख़बर कर गया, कत्ल कोई दिल का नगर कर गया। सामाईन नाज़रीन, आपने देखा कि क्या आहंग है, कैसा ज़ोर बयान है। अब आगे हम देखते हैं कि महबूब की हुस्न जमाल की तारीफ़ में किस अंदाज़ में महबूब की तारीफ़ को बयान किया है, कौन सी लफ्ज़ियात से उन्होंने फ़ायदा उठाया है और किन लफ्ज़ियात के ज़रिए से क्या मानी का नाम बरामद किए हैं। यह सौदा का देखिए, चूँकि सौदा जो थे वो तख़य्युल उनका बहुत बुलंद था, मुताला बहुत वसी था, और चूँकि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो उनकी तरबियत हुई वो फ़ारसी शायरी के हवाले से हुई, और उस वक्त का जो माहौल था उस माहौल में जो उनकी तरबियत हुई तो फ़ारसी मुहावरे ज़्यादा उनकी शायरी में, यानी उनकी गज़लगोई पर फ़ारसी असरात ज़्यादा मुरत्तब हैं। जैसा कि अभी मैंने एक शेर सुनाया आपको, ज़ालिम मैं कह रहा हूँ कि तू इस खून से दरगुज़र, सौदा का कत्ल है ये छुपाया न जाएगा। अब देखिए अंदाज़ देखिए। या इसी तरीके से देखे अगर सफ़ाए बदन को तेरे सबा, देखे अगर सफ़ाए बदन को तेरे सबा, खोले कबू न शर्म से बंदे कुबाए गुल। अब आपने देखा ना कि महबूब की खूबसूरती को बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है कि अगर कहीं हवा जो है मेरे माशूक की, मेरे महबूब की खूबसूरती को देख ले तो वो जो गुल है, जो गुल की खूबसूरती है वो कभी का नाम चटके नहीं, कभी वो मुकम्मल तौर पे खिले नहीं। क्यों? वो शर्मा जाए, उसके सामने मांद है, यानी वो फीकी है। तो ये अंदाज़ है सौदा के गुफ्तगू का। ये उनकी गज़ल की बुनियादी खुसूसियात है कि उन्होंने शिकव बयानी के ज़रिए से अल्फाज के इंतखाब में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे शिकव बयानी का ख़ास ख्याल रखा है, और यही उनकी गज़ल की बुनियादी खुसूसियत है कि निशातिया लहज़ा अख्तियार किया है, नित नई तराकीब इस्तेमाल की हैं, तख़य्युल का ज़ोर नज़र आता है, शिद्दत बयान है उनके यहाँ। ये उनकी गज़लगोई की ये जो है की शनाख्त है। सामईन, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बाज़ाब्ता तौर पे नाजुक अंदामी, नाजुक अंदामी के हवाले से भी बहुत से शेर कहे हैं। जैसे नाजुक अंदामी करूं क्या उसकी है सौदा बयां, नाजुक अंदामी करूं क्या उसकी है सौदा बयां, शमसा जिसके बदन पर हो पसीने का खराश। मामला बंदी, वारदात मोहब्बत के मज़ामीन को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बयान करने में ख़ास जौहर दिखाए हैं, और साथ ही साथ जो है ख़याल बंदी का भी एहतमाम किया है। नाज उसके नेसियाँ से हमें बाज़ रखा है, नाज उसके नेसियाँ से हमें बाज़ रखा है, ताहो वो रज़ामंद की शब हो गई आखिर। यहाँ मामला बंदी का शेर देखिए, नाज उसके नेसियाँ से हमें बाज़ रखा है, ताहो वो रज़ामंद की शब हो गई आखिर। जो कहा मैं हूँ आशिकों में तेरे, जो कहा मैं हूँ आशिकों में तेरे, वो बोला मुस्कुरा के ये ना कहो। देखा अंदाज़ कि मामला बंदी किस तरीके से ख़ुद कलामी हो रही है। जो कहा मैं हूँ आशिकों में तेरे, बोला वो मुस्कुरा के ये ना कहो। सौदा की गज़लों की आम खुसूसियत मज़मून आफरीनी है। चूँकि वो कसीदे के शायर थे, नए नए मज़ामीन को पैदा करना उनका बुनियादी वस्फ़ था, तो गज़ल गोई में भी वही के तर्ज़ को उन्होंने अख्तियार किया, यानी जिद्दत ख़याल, नुदरत बयान के ज़रिए से अपने कलाम में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे मानवियत पैदा की। ये भी सौदा की गज़ल गोई की बुनियादी खुसूसियात में शामिल है। अब आगे हम बढ़ते हैं। चमन में सुबह जब उस जंगजू का नाम लिया, चमन में सुबह जब उस जंगजू का नाम लिया,
सबा ने तेग का आबे रवां से काम लिया। चमन में सुबह जब उस जंगजू का नाम लिया, सबा ने तेग का आबे रवा से काम लिया। सामाइन, आपने देखा कि किस अंदाज में उन्होंने ये लफ्ज़ियात इस्तेमाल की है। अब आगे हम दूसरा शेर पढ़ते हैं। जुम्बिशे अबरू ने मारा लश्करे सब्रो करार। जुम्बिशे अबरू ने मारा लश्करे सब्रो करार, होवे है फैसल की जब पहुँचे है बा शमशीर जंग। अब देखिए यहाँ पे अबरू, लश्कर और करने ये जितनी भी लफ्ज़ इस्तेमाल की है, ये सारी की सारी लफ्ज़ात जो है वो कसीदे की है। लेकिन कसीदे को गज़ल के पैराए में कितनी खूबसूरती से बयान किया है, ये उनके मुआसरीन में नहीं था, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सौदा की खसूसियात शामिल थी कि वही आहंग, वही लय उन्होंने गज़ल में मिनवान पेश कर दिया, लेकिन गज़लियात के अनासिर को बाकी रखा। ये उनकी कुदरत कलाम की खूबी थी। कुदरत कलाम की खूबी ये थी कि कसीदे वाली लफ्ज़ियात, शिको बयानी के अल्फाज को बाज़ाब्ता तौर पे गज़ल में पेश किया, लेकिन गज़लिया अनासिर को ज़ाया होने नहीं दिया, बल्कि उसको बरकरार रखा। ये सौदा की गज़ल की एक खसूसियत ये भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो उनके यहाँ हमें तसव्वुफ़ाना, फ़लसफ़ियाना और बाज़ाब्ता तौर पे हकीमाना मज़ामीन भी मिलते हैं। हकीमाना, चूँकि तसव्वुफ़ की तरफ उनकी तबीयत बहुत मायल नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी गज़ल गोई में हमें तसव्वुफ़ के भी मज़मून मिलते हैं, हमें बाज़ाब्ता तौर पे हकीमाना मज़मून भी मिलते हैं और फ़लसफ़ियाना मज़मून भी मिलते हैं और अखलाकाना मज़ामीन भी मिलते हैं। अब अच्छा, लेकिन एक ये बात ये है कि बाज़ाब्ता तौर पे उनके यहाँ वो तासीर नहीं जो इश्किया मज़ामीन के बयान करने में हुई है। यानी सूफियाना अशार तो एक तो कम है, दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने जो सूफियाना अशार या पेश किए हैं उसमें तासीर भी कम है और जज्ब का कैफ़ सुरूर भी कम है। तो ये सौदा के गज़ल गोई का इम्तियाज़ नहीं है, बल्कि ये इख्तिसास है। आइए अब हम मिसाल देखते हैं। पर्दे को तअय्युन के दरे दिल से उठा दे, पर्दे को तअय्युन के दरे दिल से उठा दे, खुलता है अभी पल में तिलिस्मात जहाँ का। देखा वहदतुल वजूद का। अब आगे चलते हैं। बुलबुल ने जिसे जाके गुलिस्तान में देखा, बुलबुल ने जिसे जाके गुलिस्तान में देखा, हमने उसे हर खारे बयाबान में देखा। या इसी तरह, हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर का। उनके यहाँ अखलाकाना, हकीमाना ख़यालात और इंसान की अज़मत जैसे मौज़ूआत भी दिलकशी और तासीर से खाली हैं। मसलन मिसाल देखिए। तेगे चोबी से कहाँ कब्ज़-ए फ़ौलाद हो नसब, तेगे चोबी से कहाँ कब्ज़-ए फ़ौलाद हो नसब, न रहें साहिबे जौहर कबू ना मर्द के साथ। अब उसने कितनी प्यारी हुस्न तालील पेश की है। तेगी चोबी से कहाँ कब्ज़-ए फ़ौलाद हो नसब, न रहें साहिबे जौहर कबू ना मर्द के साथ। यानी वो लोग जो अपने अंदर हुनर नहीं रखते हैं, वो हुनर वालों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं और वो रह भी नहीं सकते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से लकड़ी की जो होती है तेग यानी चोट, जो ये जो है हथियार होता है जो लकड़ी का, उससे जो है वो लोहा फ़ौलाद जो है, फ़ौलाद के माने लोहे के होते हैं, वो लोहा मुकाबला नहीं कर सकता है, उससे बाज़ाब्ता तौर पे ये कब्ज़ा नहीं हो सकता है, यानी उसको काबू में नहीं किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ़ वही कसीदे की लफ्ज़ियात। मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ नाज़रीन इकराम कि सौदा की गज़लों की खसूसियात यही है कि उन्होंने कसीदे वाली का नमशिको बयानी के से काम लिया और यहाँ भी का ये जो है बाज़ाब्ता तौर पे उन्हीं लफ्ज़ियात से फ़ायदा उठाया और गज़ल गोई की, लेकिन गज़लिया अनासिर को बाकी रखा। लेकिन वहदतुल वजूद के मज़ामीन को बयान किया हो या फ़लसफ़ियाना के मज़ामीन को बयान किया हो या अखलाकाना या हकीमाना, इसमें थोड़ी सी तासीर की कमी है और वो जज्ब सुरूर भी नहीं जो उनके इश्क व आशिकी के शायरी का ये जो है शायरी में मिलती है। सामईन इकराम, हम आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ क्लासिकी रिवायत रही है, क्लासिकी रिवायत ये रही है कि हमेशा आशिक क्या करता है, शेख और नासे और जाहिद के ऊपर तंज़ करता है। ये रिवायत क्लासिकी है और ये अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से फिर उर्दू में शामिल हुई। क्या कि हमेशा आशिक जो है वो जाहिद पर, शेख पर क्या करेगा, तंज़ करेगा। अब आइए मिसाल देखते हैं हम। यानी लानोतान करना ये बुनियादी चीज़, ये सिफ़त है आशिक की। गज़ल की रिवायत है ये,
लिहाजा सौदा के यहाँ भी इस नौ की हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं और सौदा भी इसकी पासदारी में जाहिद और शेख को हदफ मलामत बनाते हुए नज़र आते हैं। मसलन, महराब हरम से हमें क्या काम है जाहिद, महराब हरम से हमें क्या काम है जाहिद, आशिक के है सजदे की रगड़ तेग के खम से, आशिक के है सजदे की रगड़ तेग के खम से, क्या जाने शेख काबा गया या बसूए दैर, क्या जाने शेख काबा गया या बसूए देर, इतना तो जानते हैं कि पैमाना ले गया। देखा कैसा हदफ बनाया, निशाना, ये जो है निशाना बनाया। तो ये सौदा की बुनियादी खसूसियात है कि सौदा क्या करते हैं। सौदा बहुत तीखा तंज करते हैं, और तीखा तंज क्यों करते हैं, लेकिन बहुत सलीक़े से करते हैं। जो लफ्ज़ियात अख्तियार करते हैं वो लफ्ज़ियात बिल्कुल ऐन मुनासिब होती है, और उसी लफ्ज़ियात के तवस्सुत से वो तीखा का ये जो है हमला करते हैं शेख और जाहिद पर। यानी शेख पता नहीं कहाँ गया, अब बासाब्ता तौर पे तजाहुल आरिफाना का इस्तेमाल किया है, यानी जानते हुए भी क्या कह रहे हैं, पता नहीं वो हरम की तरफ गया है या दैर की तरफ गया है। हरम, हरम बामानी मस्जिद, दैर या मानी मंदिर। मुझे नहीं मालूम कि शेख किधर गया है, मंदिर की तरफ गया है या मस्जिद की तरफ गया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो पैमाना लेकर चला गया है। पैमाना यानी शराब का कटोरा। तो ये किस तरीके से तंज किया है और किस लफ्ज़ियात में किया है, ये सौदा की खसूसियात है। और इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जिन खसूसियात को अपने गज़लों में पेश किया है वो उनकी इनफरादी शनाख्त की हामिल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे नाज़रीन किराम, तो दुनिया की बेसबाती ये गज़ल का एक अहम मौजू रहा है, और दुनिया की बेसबाती पर तमाम शुअरा ने, उनके मुआसिरीन ने और आज भी दुनिया की बेसबाती पर गुफ्तगू की है। सौदा ने भी दुनिया की बेसबाती के मौजू पर खूब अशार कहे हैं। उन्होंने सियासी और माशी ज़बूहाली के सबब इस नौ के ख़यालात को मुख्तलिफ़ रंग से अपने अशान में बांधा है, जिसमें एक ख़ास किस्म की क़ुनूतियत और अफसरदगी नुमाया है। लेकिन यह सौदा की गज़ल गोई का इम्तियाज़ नहीं, बल्कि दुनिया की बेसबाती में ये रंग इख्तिसास की हैसियत रखता है। अब मिसाल देखिए, भला गुल तू तो हंसता है हमारी बेसबाती पर, भला गुल तू तो हंसता है हमारी बेसबाती पर, बता रोती है किसकी हस्ती ए माहूम पर शबनम, बता रोती है किसकी हस्ती ए माहूम पर शबनम। अब आगे देखते हैं। जब आगे हम देखते हैं, दुनिया तमाम गर्दिश अफलाक से बनी, दुनिया तमाम गर्दिश अफलाक से बनी, माटी हज़ार रंग की इस चाक से बनी। अब देखिए कैसा तजर्बा बयान किया है। दुनिया तमाम गर्दिश अफलाक से बनी, माटी हज़ार रंग की इस चाक से बनी। इसी तरह, ए गुल सबा की तरह फिरे इस चमन में हम, ए गुल सबा की तरह फिरे इस चमन में हम, पाई न बू वफ़ा की तेरे पैरहन में हम। क्या कह रहा है शायर? ये कह रहा है कि ए सबा, हम इस दुनिया में फिरते रहे, और मैं ये कोशिश करता रहा कि मैं तेरी वफ़ा की बू को सूंघ लूँ, लेकिन हमें कहीं तेरे लिबास में हमें वफ़ा की बू नज़र नहीं आई। यानी दुनिया किसी की वफ़ादार होती ही नहीं, ये कहना चाह रहे हैं वो। लेकिन किस अंदाज में कहा है और किस तर्ज से कहा है, और क्या क्या उन्होंने नुदरत बयान पैदा किया है इसके अंदर। यानी सबा का इस्तेमाल करना, बू का इस्तेमाल करना, पैरहन का इस्तेमाल करना, और फिर उससे एक मुनज़्ज़म मानी को बरामद करना, ये सौदा की कादिरुल कलामी की बुनियादी खसूसियत है, और ये उनकी गज़ल की अहमियत है। अब देखिए सामईन किराम, ए गुल सबा की तरह फिरे इस चमन में हम, पाई नबू वफ़ा की तेरे पैरहन में हम। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें उनके यहाँ ईहाम, हुस्न तालील की भी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। ख़त के आने से गम न खा, ख़त के आने से गम न खा, लिखा किस्मत का कोई मिटता नहीं, लिखा किस्मत का कोई मिटता है। यानी ख़त के आने से गम न खा, लिखा किस्मत का कोई मिटता है। तो इस तरीके से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ईहाम भी पैदा किया है। चूँकि एक ये उस दौर का एक आम रुझान था, क्योंकि सौदा 18वीं सदी में है और उस वक्त ईहाम गोई अपने उरूज पर थी। बाद में ईहाम गोई की मुखालिफत भी हुई और लोगों ने उसे तर्क करने की भी कोशिश किया, लेकिन उसके असरात आज भी हमारे यहाँ गज़ल में पाए जाते हैं। यानी ईहाम के ज़रिए से शायर
काम लेता है और गज़ल में ईहाम के ज़रिए से मानी पैदा करता है। यानी दो लफ्ज़ इस्तेमाल करना, बल्कि एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करना जिसके दो मानी हों, एक मानी करीब के हों और दूसरे मानी बईद के हों, लेकिन शायर की मुराद मानी बईद से हो। तो इस तरीके से ईहाम पैदा होता है कि उस वक्त एक फ़न था, तो सौदा भी उससे फितरी तौर पर मुतासिर हुए और उन्होंने ईहाम गोई के हवाले से इस तरह की बहुत सी मिसालें पेश की हैं। या इसी तरह हुस्न तालील की भी उनके यहाँ खूब मिलती है, बल्कि हुस्न तालील में तो वो ये समझिए कि हुस्न तालील के तो बादशाह हैं। तन्हा तेरे मातम में नहीं शाम सिया पोश, तन्हा तेरे मातम में नहीं शाम सिया पोश, रहता है सदा चाके गरेबान सहर भी, रहता है तन्हा तेरे मातम में नहीं शाम सिया पोश, रहता है सदा चाक गरेबान, रहता है सदा चाके गरेबान सहर भी, नहीं उस गुल के आरिस पर हैं जुल्फ सिया सौदा, जले दिल के धुएं का है ये पेचो ताब आतिश पर। इसी तरीके तशबीह की मिसालें भी जब हम देखेंगे तो बख्शे हैं यूँ दिल को मेरे तक़वियत, बख्शे हैं यूँ दिल को मेरे तक़वियत दुश्नाम यार, जूँ दवाए तख्त से पाए कोई बीमार फैज़, लगा जिन्हार मत सौदा इन आँखों से दिल अपने को, कि हर बदमस्त से रखना भला है दूर शीशे का। तो सामाईन किराम, अभी जो आपने मिसालें देखी, इन मिसालों से ये बात वाज़ेह हो गई कि सौदा की गज़ल गोई अपने अंदर एक कसीदे का आहंग रखती है, लेकिन उनकी कसीदे की बुनियाद पे और गज़ल में बहुत इम्तियाज़ है, उसके बावजूद भी गज़ल में बहुत ही इम्तियाज़ है। ये इम्तियाज़ क्यों है कि सौदा भी जानते थे कि गज़ल के लवाज़मात क्या हैं, सौदा जानते थे कि गज़ल के लवाज़मात क्या हैं, और सौदा ये भी जानते थे कसीदे के ये लवाज़मात क्या हैं, लेकिन चूँकि ज़हनी तरबियत थी इसलिए उसके असरात गज़ल पर मुरतब हुए। तो सामाईन किराम, मानिए ये जो है नुदरत बयान, ख़याल बंदी, मज़मून आफरीनी या इसी तरीके से जिद्दत बयान, ज़ोर बयान, जोश बयान उनकी गज़लों की बुनियादी खसूसियात है, और इसी खसूसियात की बुनियाद पर सौदा सौदा हैं। आपने देखा हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, अब ये कसीदे का शेर है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी, फराहम ज़र्ग करना बाई से अंदोह दिल होवे, नहीं कुछ जम से गुंजे को हासिल जुज़ परेशानी, अकेला हो के रहे दुनिया में कर चाहे बहुत जीना, हुई है फैज़ तन्हाई से उम्र खिज़र तूलानी, अजब नादा है वो जिनको है उज बेताज सुल्तानी, फलक बाले हुमा को पल में सौंपे है मगस रानी। अब ये कसीदे के शेर हमने पढ़े और अभी आपने गज़ल के कारण शेर की समाअत की, देखा दोनों का आहंग बिल्कुल सेम है, चूँकि उनके यहाँ शिको बयानी बहुत थी, उनके यहाँ जिद्दत बयान बहुत था, उनके यहाँ बाज़ाब्ता तौर पे ये है उलूए शान था, और उस उलूए शान की बुनियाद पे एक बुलंद आहंग है। उनके यहाँ आह नहीं है बल्कि उनके यहाँ वाह है। तो हर शेर में एक तमतराकी नज़र आती है, हर शेर में एक घन और गरज नज़र आती है। यह सौदा की बुनियादी खुसूसियत है। अब गज़ल का शेर, हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं जो सैर करूँ कोहे तूर का। अब देखिए, बिरंगे कोहरे खामोश हरफ नासज़ा सुनकर किताबत गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। पहला शेर जो पढ़ा वो गज़ल का था और दूसरा शेर जो पढ़ा वो कसीदे का था, लेकिन कितनी ममासलत है। तो इस वजह से सामाईन किराम, सौदा की ये बुनियादी इनफरादियत है और कलाम की खूबी है कि सौदा अपनी ज़ात में गज़ल गोई के हवाले से एक बासाबता तौर पे अंजुमन थे। उन्होंने हर मज़ामुइन को और हर तरीके वाक़यात को अपनी गज़ल गोई में पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया सामाईन किराम। आसाम की विशालता केवल ब्रह्मपुत्र नदी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक वातावरण में भी दिखाई देती है। यही वह कामरूप है जिसकी गाथा पौराणिक कहानियों में भी पाई जाती है। मैं कामरूप हूँ, मैं साक्षी हूँ उस पौराणिक काल का।
प्रभु महादेव की करुणा से मुझ में ही कामदेव को नया जीवन मिला, इसलिए मैं कामरूप हूँ। ऐसी ही एक पौराणिक गाथा जुड़ी है आसाम के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या देवी के मंदिर के साथ। प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त माँ कामाख्या के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए समस्त संसार भर से यहाँ पर आते हैं। जिस पहाड़ी पर मां कामाख्या का मंदिर स्थित है उसे नीलांचल पहाड़ कहते हैं। वर्तमान में मंदिर तक पहुंचने के लिए अति उत्तम मार्ग की व्यवस्था है। परंतु एक समय ऐसा भी था जब लोगों को पत्थरों की सीढ़ियों पर चढ़कर वहां तक पहुंचना पड़ता था। भक्ति के साथ साथ यह एक पर्यटन स्थल भी है। यहाँ के स्थानीय निवासी इसी पर्यटन से अपनी आजीविका भी चलाते हैं। हर वर्ष आषाढ़ माह में मंदिर के द्वार कुछ समय बंद रखने की परंपरा है, जिसे अम्बुवासी कहते हैं। अम्बुवासी के दौरान देश भर से लाखों भक्तजन यहाँ पर आकर रात बिताते हैं। मंदिर खुलते ही भक्तजन माँ कामाख्या के दर्शन कर लेते हैं। अम्बुवासी प्रवृत्ति के समय यहाँ अत्यंत भव्य मेला लगता है। भक्तों की ऐसी ही भीड़ नवरात्रि में भी दिखाई देती है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। आज हम बात करने वाले हैं प्रेम के इसी भाव पर, और आज जो हमारी चर्चा होगी वह होगी मलयालम के एक उपन्यास चैमीन पर। जी हाँ, मलयालम भाषा में लिखा गया यह उपन्यास आज भी प्रासंगिक है। 1956 में लिखा, शिवशंकर पिल्ले ने इस उपन्यास को लिखा था, और यह उपन्यास जो है आज भी अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए है। इस उपन्यास की अगर हम कथासार की बात करते हैं तो इस उपन्यास में जो है एक कहानी है। कहानी जो है वह है किसकी? वह है मछुआरे जीवन से संबंधित एक कहानी है। मछुआरा समुदाय जो है वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, किस प्रकार से वह रहता है, कैसे उन लोगों की संस्कृति होती है, कौन कौन से उनके मूल्य हैं। और यह जो उपन्यास है मूल रूप से एक स्त्री के जो यौन सुचिता जिसे हम कहते हैं उस भाव पर केंद्रित उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से जो है लेखक ने दिखाया है कि भारतीय समाज में एक ऐसा मध्यम वर्ग जो रोज मर खप रहा है, जो रोज संघर्ष कर रहा है, और उस संघर्ष के चलते वह किस प्रकार से जो है वह प्रतिदिन समस्याओं का सामना कर रहा है, और उसमें एक स्त्री की क्या स्थिति है।
अगर हम इस उपन्यास को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि उपन्यास की जो कहानी है वह केरल के समुद्र तट के किनारे पर रहने वाले जो है एक समुदाय की है, जो वहाँ पर छोटी छोटी अपनी झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, छोटे छोटे से उनके अपने घर हैं। वहाँ पे भी जो है अलग अलग जातियाँ हैं, 5 जातियों का यहाँ पे लेखक ने वर्णन किया है कि एक जाति, 2 जाति, 3 जाति, यानी कि 5 तरह की जातियाँ हैं, जिसमें से एक जाति के पास ही यह अधिकार है कि वह मछली पकड़ने वाला जाल खरीद सकता है। यानी कि सबके पास तो यह अधिकार भी नहीं है कि वह जाल खरीदे और नाव लेके समुद्र में उतरे और वहाँ से मछलियाँ पकड़े और मछलियों के का व्यापार या व्यवसाय कर सके, क्योंकि समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की आजीविका का मूल रूप से यही साधन है। तो वो लोग जो है इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो चेमीन उपन्यास का चेम कुंजी, यह जो नायक है और उसकी जो पत्नी है चक्की, इन दोनों से जो है कहानी की शुरुआत होती है। चक्की और चेमकुंजी जो है, बार में लेखक ने इसके लिए चेम्पन नाम यूज किया है ना। तो ये जो है दोनों पति पत्नी हैं, जिनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी है करुतम्मा और दूसरी जो बेटी है वह है पंचमी। तो दोनों बेटियों की जो उम्र है उसमें भी काफ़ी फ़र्क है। और यहाँ पे करुतम्मा जो है वह लगभग जो है 17 साल की युवती इस उपन्यास में दिखाई है। तो बचपन से ही जैसे खेलते समय, बाहर जाते समय, आते समय जो है एक मुस्लिम एक लड़का है परिकट्टी, उससे के साथ वह खेलती है। उसके साथ खेलते हुए वह बड़ी होती है और जो है बड़ी होती है उससे उसका क्या है, प्रेम जिसे हम कहेंगे, एक भाव जो साथ रहते रहते उत्पन्न हो जाता है। उस परिकट्टी जो लड़का है परिकुट्टी, उससे उसका प्रेम हो जाता है और वह जो है उसके साथ रहना चाहती है, शादी करना चाहती है। ये इस तरह के भाव उस लड़की के मन में है। लेकिन जो उसका पिता है चेम्प कुंजू, वो क्या करता है कि वह देखता है कि जो परिकुट्टी जो है वह क्या है, वह क्या कर रहा है, वह जो है उसके पास आर्थिक संसाधन अच्छे से हैं और आर्थिक संसाधन अच्छे से होने के कारण जो है वह उससे पैसा उधार लेता है। पैसा उधार लेके वह क्या करता है, पैसा उधार लेके वह एक जाल खरीदना चाहता है, एक नाव खरीदना चाहता है और मछलियाँ पकड़ना चाहता है, और वह ऐसा करता भी है। और इस प्रकार से जो है अब ये उसे पता है कि उसका जो परिकुट्टी है, जो उसका है जो संबंध, यानी कि उसका जो प्रेम भाव है वह उसकी बेटी के प्रति है। और चक्की भी इस बात को अच्छे से जानती है कि जो है उसकी बेटी को वह पसंद करता है। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं, जैसे चैंपियन कुंजू क्या करता है कि वह नाव लेके जाता है। एक दिन तो ऐसा होता है कि वह दोबारा से एक नाव समुद्र में एक दिन में एक बार ही जो है मछुआरा जो है वो नाव को उतार सकता है और उससे क्या कर सकता है, उससे वह मछलियाँ ला सकता है। ऐसा उन लोगों का अपना नियम है। लेकिन वह आता है, थोड़ा विश्राम करता है, लेकिन उसकी ललक, पैसे के प्रति लालच उसको क्या करते हैं, उसको खींच लेते कि नहीं अभी मैं फिर से दोबारा से मैं जाता हूँ। दोबारा से वह जाने को तैयार होता है। तो जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू होती है तो स्वाभाविक रूप से जो है ईर्ष्या का जो है भाव रखने वाले लोग भी आसपास ही होते हैं, कहीं दूर नहीं होते हैं। तो उसमें क्या है कि वह जो है और 2 मछुआरे हैं, वह कहते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई नियम नहीं है, ये कोई कानून नहीं है कि आप दोबारा से समुद्र में उतरो और मछलियाँ लेने के लिए जाओ। लेकिन वह नहीं मानता है और जाने लगता है। जब जाने लगता है तो भयंकर तूफान आता है, बरसात आती है, जिसके चलते वह नहीं जा पाता है। और इसी प्रकार से एक कड़ी दर कड़ी जो है वो कहानी जो है चेमीन उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है। तो जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ती है, कहानी का जो है भाव बदलता सा हमें नजर आता है। परिकुट्टी से भी जो है करुतम्मा का प्रेम, इधर चेम्प कुंजू का और जो है चक्की का जो है आपस में जो है पति पत्नी जो है वह कैसे जो है जैसे जैसे स्थितियाँ बदलती है, कैसे कैसे उनका लालच बढ़ना शुरू हो जाता है, कैसे कैसे उनके मन में भाव बदलने शुरू हो जाते हैं। सामान्य रूप से जब घर में कुछ नहीं था तो उनका जीने का एक अपना तरीका था, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक स्थिति बदलती है तो कैसे इंसान बदलता है, कैसे उसके भाव बदलते हैं, इस उपन्यास में लेखक ने दिखाया है।
तो वह क्या है कि उसको जिन चीज़ों के लिए वह दूसरों को पहले ताना देती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही चीज़ें वह खुद अपनाना शुरू कर लेती है। तो चक्की कहती है कि क्या हो गया, अगर पैसा आया है तो अच्छे से रहेंगे, अच्छे से ये करेंगे वो करेंगे। जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, वह स्वाभाविक रूप से मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि पैसा आने के बाद वह उन प्रवृत्तियों को पूरा करने की कोशिश करता है। तो वही भाव यहाँ पर जो है लेखक ने दिखाया है। तो उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता से जब जो है बार बार जो है करुतमा बोलती है कि उसका जो दोस्त है परिकुट्टी, उसके पैसे वापस लौटाए जाएं। तो चक्की कहती है कि जो है दे देंगे, कोई बात थोड़ी है। लेकिन उसके पिता के मन में यह भाव है कि उसे पैसे लौटाने ही नहीं है। एक बार पैसे गए तो क्या है कि सामान्यतः इस भाव को दिखाया है कि समाज में आज भी जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं और उसकी ज़रूरत के समय जब कोई हमसे पैसा मांगता है, दे देते हैं, तो हमें अपना पैसा मांगने में ही लज्जा महसूस होती है, या फिर अगला पैसा लौटाना ही नहीं चाहता है और तरह तरह के बहाने करता है। ये इस तरह की जो भाव है समाज का जो है वह शिवशंकर पिल्ले ने इसमें दिखाया है कि सामान्यतः हम पैसा लेते समय हम कुछ और होते हैं, देते समय कुछ और हो जाते हैं। और यही प्रवृत्ति चैंपन अपनाता है, वह उसके पैसे देना ही नहीं चाहता है। तो जो है एक बार वह समुद्र में जो है मछलियाँ पकड़ने के लिए गया हुआ था और वह समुद्र में जो है नाव को पतवार को पकड़ के चल रहा था, दौड़ रहा था। और उसी दौरान जो है देखता है कि एक नाव आ रही है, समुद्र में जो है नाव आ रही है और भयंकर तूफान है, लेकिन एक नाविक जो है वह खड़ा हुआ है अडगता से, वह जो अडिग है और उसको जो है आगे जाने ही नहीं दे रहा है। देखता है कि आहिस्ता आहिस्ता वह उसके पास आता है, तो वह उस अक्ष को देखता है। देखने के बाद जो है वह क्या कहता है कि यह है कौन। तो देखता है कि उसमें एक लड़का है पलनी, और वह समुद्र में नाव को लिए जा रहा है। और समुद्र में नाव जब जा रही है तो तूफान में भी, आंधी में भी, भयंकर बरसात में भी वह लड़का जो है वह अडिग खड़ा है। तो उसको लगता है कि बड़ा बहादुर लड़का है। जैसे तैसे करके वह जो है चैंपन भी जो है उसकी बराबरी करता है, उसके साथ साथ अपनी नाव को दौड़ाता है। और जैसे ही वह नाव को दौड़ाता है तो वह जो है उसको काटना चाहता है, लेकिन काट नहीं पाता है और बराबरी पर दोनों जो है नाव किनारे पर लगती हैं। जब नाव किनारे पर लगती हैं तो चैंपन उससे काफ़ी प्रभावित होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ के हो और तुम कौन हो। तो वह जो है अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम पलनी है और मैं अनाथ लड़का हूँ, और इस प्रकार से है वो अपनी जाति बिरादरी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर जो है चैंपन क्या करता है, चैंपन उसे अपने घर बुलाता है। वो उस लड़के को बहुत पसंद करता है और घर बुला के वो क्या कहता है कि जैसे ही जो है चक्की और जो है उसकी जो बेटी करुतम्मा है वो मिलकर जब खाना वाना बनाती हैं, तो चक्की को पहली वो जो क्या नाम है उसका पलनी को पहली बार महसूस होता है कि घर भी होता है, अपनापन भी होता है, माँ भी होती है। यानी कि उसका तो कुछ था ही नहीं, ऐसे ही अकेला था, जितना मन में आए काम किया, जितना मन में आए नहीं किया, जो आए जहाँ चाहा वहाँ रह लिया, जो चाहा खा लिया, जो चाहा पहन लिया, कोई उसका पूछने वाला ही नहीं था। तो उसे एक रागात्मक सा एक रिश्ता सा जो है यहाँ पे लेखक ने दिखाया है कि एक अनाथ जो व्यक्ति होता है वह किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से रिश्ते नातों को देखता है, और वह पलनी के माध्यम से उन समस्त अनाथ बच्चों का जो है चित्र हमारे सामने खींच देते हैं, जो किसी भी कारणवश रहे हों लेकिन जो है अनाथ रहने पर मजबूर हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है जब खाना खिलाती है चक्की उसे, तो वह भाव विभोर हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मेरी माँ होती तो इसी प्रकार से करती, और इस प्रकार से उनका एक रागात्मक सा उस घर के प्रति लगाव हो जाता है। तो वहाँ पे चैंपन कुंजू क्या करता है कि वह कहता है कि मैं जो है अपनी बेटी की जो शादी है वह पलनी से करूँगा। तो पलनी से पूछा जाता है, पलनी चूँकि जो है कि प्रेम तो वह कुट्टी से करती है, लेकिन अलग जाति का होने के कारण जो है उसकी शादी नहीं कर सकती है, उसके माता पिता भी नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी जो इस उपन्यास में जो बात दिखाई है या जिस अंधविश्वास की चर्चा की गई है वह यह है कि इस बताया गया है कि अगर कोई लड़की दूसरी जाति में विवाह करती है और इसके बाद जो है विवाह को तो आप छोड़िए, अगर वह शादी के बाद किसी पर पुरुष के बारे में सोचती भी है और अगर वह उसके दिमाग में इस तरह का भाव भी, अगर उसके मन में ऐसा भाव भी अगर पैदा होता है, तो क्या है जो है भाव भी अगर पैदा होता है तो उसको समुद्र निगल जाएगा। समुद्र क्या करेगा, समुद्र
उसको निगल जाएगा और वो जो है विधवा हो जाएगी। इस तरीके की जो है, इस तरीके का जो है भाव इस उपन्यास में दिखाया है कि समुद्र उसे निगल जाएगा। और उसी इस एक भय था, करुतम्मा को भय था कि कहीं अगर मैं परिकुट्टी से जबरदस्ती शादी कर लूं तो पूरा जो समाज, सिर्फ अपना घर नहीं, आसपास का सारा इलाका जो है वो समुद्र की जो लहरें हैं वो उस इलाके को तबाह कर देंगी और वहाँ पे सिर्फ विनाश जो है वो निश्चित है। यानी कि एक ऐसा अंधविश्वास, एक ऐसा भाव जो वहाँ पे चारों तरफ व्याप्त है, वह लेखक ने इसमें दिखाया है। तो करुतम्मा क्या सोचती है, वह कहती है कि ठीक है, मैं जो है वो ये तो मैं मान लेती हूँ कि मैं जो है पलनी से शादी कर लूँगी, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ करना होगा। तो चक्की बोलती है कि क्या करना है? तो कहती है कि आपको क्या करना है, आपको वो जो पैसे आपने परिकुट्टी से लिए हैं, जिससे वह प्रेम करती थी, जो पैसे आपने लिए हैं वह पैसे उसे वापस कर दो। तो चक्की कहती है कि मैं जैसे तैसे करके वो पैसे लौटा दूंगी, लेकिन तुम्हारी शादी जो है वो पलनी से ही होगी। और इस प्रकार से करुतम्मा की शादी जो है वह पलनी से हो जाती है। करुतम्मा जब जो है शादी के बाद अपने ससुराल आती है, आज भी हमारे समाज में अगर कोई अनाथ है, अगर कोई गरीब है और उसके घर में सुंदर कन्या विवाह के शादी करके अगर उसके घर आती है, तो लोग तरह तरह की बातें सोचते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं और तरह तरह की बातें बनाकर अगले का जीना हराम कर देते हैं। वही इस उपन्यास में जो है लेखक ने लिखा है कि जैसे ही आती है करुतम्मा तो लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे शादी कर दी, इसके साथ शादी कैसे कर दी, जो है ये तो अनाथ है, इसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई जो है परिवार भी नहीं है, जरूर लड़की में कोई ना कोई खोट होगा, वरना ऐसे कौन शादी करता है, ये तो अनाथ है ये तो। और उस समय जो है झटका लगता है पलनी को कि लोग ऐसे भी सोचते हैं, मेरे बारे में इस तरीके का विचार रखते हैं, और वह काफ़ी उसको जो है वो दुख होता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे ही शादी होती है, अगर हम अपने हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य रीति रिवाजों की अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जैसे शादी के बाद जब दुल्हन जब जाती है तो उसके साथ या उसके बाद में उसके भाई जाते हैं और वह उसको वापस लेके आते हैं, उसको पग फेरा की रस्म बोली जाती है। तरह तरह की अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें अलग अलग इसे नाम दिए गए हैं। तो वह पूछती है कि महिलाएं देखती हैं कि जो है करुतम्मा को लेने के लिए कोई नहीं आया, जो रस्म है उसे निभाने वाला कोई नहीं है। तो महिलाएं फिर से बात बनाती हैं कि ऐसा क्या है कि इसे वापस भी नहीं बुला रहे। लड़की शादी होके अगर ससुराल आ जाती है और मायके वाले अगर उसे तुरंत अपना सारा संबंध अगर तोड़ लेते हैं तो क्या है, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें मानी जाती हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो गया कि माता पिता इसे संबंध ही नहीं रखना चाहते हैं। जरूर कुछ ना कुछ लड़की में खोट है, और खोट का सीधा सीधा मतलब लड़की के चरित्र से ही जोड़ा जाता है। यहाँ आकर जो है कहानी जो है वो एक अलग मोड़ लेती है। शादी के बाद जो है करुतम्मा एक आदर्श पत्नी बन के रहती है। वह पूरी वफादारी के साथ अपने घर को चला रही है, मेहनत करके अपने घर को जो है संजो रही है और बहुत अच्छे से वह अपने परिवार को एक रूप देना चाहती है। लेकिन तरह तरह की जैसे ही कोई विपत्ति आती है, जैसे ही कुछ होता है तो तुरंत जो है करुतम्मा का नाम ले दिया जाता है। कहाँ पर? समुद्र के किनारे हाट पर रहने वाले मछुआरे, अरे अरे ऐसी बीवी लेकर आया है, यह सबका अनर्थ कर देगी, सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और यह सुन के पलनी सोचता है कि ये सब क्या है, क्या कमी, ऐसी क्या कमी है मेरी पत्नी में जिसके कारण वहाँ पे भी सुनना पड़ रहा था, मायके वाले भी नहीं आए और यहाँ पे भी मुझे सुनना पड़ रहा है, यानी कि जरूर कुछ ना कुछ लड़की में खोट है। तो वह एक दिन पूछता है वह करुतम्मा से कि तुम्हारा जो है ऐसा क्या, तुम्हारा कोई किसी से गलत संबंध है, तुम ये जो है सब मुझे, क्या तुम अपवित्र हो, या जो है तुम्हारी जो है यौन जो तुम्हारे संबंध तुम्हारे शादी से पहले किसी दूसरे पुरुष से रहे हैं। तो करुतम्मा जो है बहुत आहत होती है। आज भी हम देखते हैं, अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ें, इसके बाद जो है अगर हम प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या में देखते हैं, अब मैत्री पुष्पा की जो गुड़िया भीतर गुड़िया को लीजिए, उसका पति जो है जैसे ही वो पहली बार जब अपने पति से मिलती है तो वह उसका पति जो है वो जानना चाहता है वह लड़का कौन था जो तुम्हारे जो गाड़ी को धक्का दे रहा था और जिसकी आंखों में आंसू थे, कोई तुम्हारा प्रेमी था?
सामान्यतः इसी तरीके के जो शब्द जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। प्रेमी शब्द तो फिर भी थोड़ा सा सभ्य है। अगर हम बात कर रहे हैं कृष्णा अग्निहोत्री की, तो कृष्णा अग्निहोत्री के जो पति हैं, जो वह एक बार जब पार्टी में वो गई हुई होती है तो वह किसी से जो है बात कर रही है, हंस के बात कर रही है, तो उसके पति उसे देख लेते हैं और जो है उसको बुलाते हैं ऊपर होटल में जो कमरा है। कहते हैं कि एक बार मुझे तुमसे कुछ काम है। तो कहती हाँ हाँ बोलो। तो कहते एक बार आओ। और कहते हैं कि क्या क्या गालियाँ जो है उन्होंने निकाली उनके पति ने, पता नहीं। एक सभ्य और सुशिक्षित जो है उसके मुंह से वो शोभा भी नहीं देंगी। जो उन्होंने लिखा है, खुलम खुला लिखा है कि तू 2 कौड़ी की, पता नहीं क्या क्या शब्द जो है प्रयोग किए हैं। बहुत ही असभ्य शब्दों का प्रयोग जो है अग्निहोत्री जी ने कृष्ण अग्निहोत्री के लिए किया है। ऐसे ही एक लड़की के जो है एक जब उसकी शादी होती है या फिर वह किसी के संबंध में जब आती है, जब भले ही प्रेम विवाह हो, तो ये पूछा जाता है। और इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि सब कुछ इसी के इर्द गिर्द हमें घूमता सा नजर आने लगता है। तो वो पूछता है कि पर ये जो है पलनी पूछता है कि तुम्हारा उससे क्या नाजायज़ रिश्ता था। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और वह फिर सारी बातें बताती है और कहे कि मैं उसको वहीं पे छोड़ चुकी हूँ और मैं उसे भूल चुकी हूँ और जो है आप मुझे ये चीज़ दोबारा से याद ना दिलाएं। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है पलनी के मन में ये बात खटकती है। कोई भी पुरुष यह बात स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि उसकी पत्नी जो है उसका संबंध किसी दूसरे पुरुष से हो। ये चीज़ जो है वो इस हद तक जो है हमारी जो मानसिकता है, इसमें जो है पुरुष मानसिकता जिसे हम कहते हैं, उसमें इस तरीके से घर किए हुए है कि इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश ही नज़र नहीं आती है। पहले से भी जैसे कहा गया है कि जब पितृसत्तात्मक जो समाज है उसकी जब स्थापना हुई, जो हमारे अगर हम कहते हैं कि किस तरीके से जो है जब एक स्त्री जो है, अगर हम पूरी संरचना की ही अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं इतिहास को उठाएंगे और अगर हम पूरे इतिहास को अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो विवाह नामक संस्था का जन्म कब हुआ? जब सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब तो विवाह नामक संस्था नहीं होगी। और उस समय कोई भी स्त्री जो किसी भी पुरुष के पास आ जा सकती होगी। तो जो संभवतः जो अनुमान लगाए जाते हैं उसमें यही है कि पहली बार जब एक स्त्री ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो उसे देवी का रूप दिया गया और एक देवी जो है उसे माना जाने लगा। लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता से विज्ञान का विकास हुआ, चीज़ों का, समाज का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, तो लोगों ने जाना कि बच्चा जो है वो बच्चा होने की प्रवृत्ति क्या होती है, किस तरीके से बच्चा होता है। तो उस समय एक जो पुरुष है जो है संतान उत्पत्ति के कारण स्त्री ने सामान्यतः घर में रहना शुरू किया। उसके बाद जो है पुरुष बाहर कमा के लेके आता था और जो है शादी तो होती नहीं थी तो स्त्री कहीं भी जा सकती थी अपनी मर्जी से। तब पुरुष को ये लगा कि जो संपत्ति मैं मेहनत से अर्जित कर रहा हूँ उसको जो है उसका जो वारिस है वो मेरी ही संतान होनी चाहिए। और तब विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ। उस विवाह नामक संस्था के जन्म में ये तो था कि ये जो स्त्री है यह सिर्फ मेरी है, मैं इसे शादी कर रहा हूँ तो ये जो है ये मेरे पास ही रहेगी, यानी कि एक संपत्ति की तरह से उसने स्त्री को लिया। लेकिन किसी पुरुष ने, क्योंकि चूंकि कर्ता धर्ता या जो है मूल जो है सत्ता जो पुरुष के ही हाथ में थी, तो उसने ये निर्धारित अपने लिए ये सिर्फ सुरक्षित रखा कि एक पुरुष जो है वो कितनी भी महिलाओं से शादी कर सकता है, लेकिन एक महिला को एक ही पुरुष का जो है की छत्रछाया में रहना पड़ेगा। और इसी से क्या है यौन सुचिता की अवधारणा का जन्म हुआ। मेरा वर्चस्व, मेरी बीवी यानी पत्नी, प्रेमिका यानी कि एक संपत्ति की तरह से उसे एक वस्तु समझा जाने लगा। और वस्तु की तरह से जब किसी इंसान का मूल्य आंका जाएगा तो संभवतः समस्याएं अपने आप उत्पन्न हो जाएंगी। और जो है जैसे ही विवाह नामक संस्था का जन्म इसी के लिए किया गया था कि पत्नी जो है वो मेरे ही जो है जो कहेंगे मेरे ही पास रहे और वह किसी दूसरे से जो है इस तरह जो तरीके का संबंध ना रखे। तो उस समय के बाद आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों का विकास बढ़ने के बाद आज भी हमारे समाज में जो है इस यौन सुचिता यानी कि जो स्त्री है उस पर सिर्फ मेरा हक है। पहला जो भी संबंध जो भी बनेगा पति पत्नी का वह उसी पुरुष के साथ बनेगा जिससे उसकी शादी होगी, अन्यथा वह किसी के संपर्क में नहीं रहेगी। यह एक धारणा, एक मानसिकता जो है वो बनाई गई जो इस उपन्यास में दिखाई है। तो करुतम्मा जो है वो सफाई देती है कि नहीं, मेरा जो है उससे कोई ऐसी तरीके का संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पलनी को अपने आप को पलनी अपमानित महसूस करता है।
बहुत उसे जो है अपमानित महसूस करता है कि यह जो है मेरे होते हुए भी, यानी कि शादी करने के बाद भी कहीं इसके मन में किसी अपने प्रेमी के प्रति, यानी कि पहला प्यार, पहली चीज़ें, ये जो हमारी एक जो भारतीय समाज की जो एक क्या कहेंगे इसे हम, जो संरचना, जो मान्यताएं बना दी गई हैं, पहला प्यार, प्रेम, पहला पहला, यानी कि पहला पहला होता है, यानी कि प्रेम को आप किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, प्रेम को आज किस तरीके से आप जो है उसको जो है मान्यताएं दे रहे हैं। कौन सा पहला? अगर पहले प्रेम की इतनी बात है तो एक संतान जो सबसे पहले अपनी माँ के गर्भ में आती है, तो माँ से ज़्यादा प्रेम कोई जो वो क्यों नहीं होता है? क्यों, मतलब आज भी हम देखते हैं कि कितना वृद्ध होने पर कितना मान सम्मान जो संतान अपनी जो है माता पिता को दे रही है। यहाँ पे जो है किस तरीके की जो मानसिकता है जिसका बनाया गया है, बुनावट कैसी की गई है, उस भाव को यहाँ पे दिखाया है लेखक ने कि प्रेम जो है एक भाव है, आप इसे एक सीमा में नहीं बांध सकते हैं। करुतम्मा जो है उसको वही उसी अवधारणा से, आज का भी जो प्रेम है किससे प्रभावित है, देखते हैं कि सोशल मीडिया से प्रभावित है। फिर क्या दिखाया जाता है, हम बच्चों के सामने क्या परोस रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, और किस तरीके की मेंटेलिटी बन जाती है। कोई भी गाना उठा के ले लीजिए, अगर हम उसमें देखते हैं कुछ को अगर अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो उसके बाद क्या है कि एक ही धारणा हमारे सामने आती है कि एक स्त्री है और एक पुरुष है, और वही उसका प्रेम है, वही उसकी दुनिया है, वही सुबह से शाम तक हमारे बच्चे देख रहे हैं, वही हमने उसी को हमने प्रेम मान लिया है। प्रेम का वास्तव में मतलब क्या है, यह जो है किस तरीके से जो है कबीर ने क्या कहा है, यही कहा है कि ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का मतलब ही है शुभेच्छा चाहना, किसी का भला चाहना, अच्छा चाहना। क्या ये प्रेम नहीं है? किसी का हित करना प्रेम नहीं है? किसी की भलाई करना प्रेम नहीं है? ऐसे बहुत से मुद्दों को जो है इस उपन्यास में उठाया गया है। तो फिर जैसे ही उस शारीरिक प्रेम की जिसकी हम बात कर रहे थे, करुतम्मा का और उसके बीच में चर्चा चल रही है, तो वह क्या कहता है कि ये जो प्रेम जो तुम है, आज भी तुम्हारा जो है उससे संबंध है, और बार बार करके उसे याद दिलाया जाता है और उसे ये एहसास कराया जाता है कि वो जो है वो भ्रष्ट है। मछली का व्यापार करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है तो महिलाएं उसका जीना हराम कर देती हैं कि अच्छा इसके तो मुस्लिम लड़के से संबंध रहे हैं, और उस प्रकार से कैसे कैसे जो है एक इंसान कैसे प्रभावित होता है, और वह सच में मान बैठती है कि हाँ वही है। क्या करती है अन्य से नन्या की लेखिका प्रभा खेतान, अगर हम उसके चरित्र को लें या फिर उसकी आत्मकथा, उनकी आत्मकथा पे अगर हम चर्चा करें या उनके जीवन की हम बात करें, तो क्या कहती हैं कि मैं आजीवन इस चीज़ को भूल ही नहीं पाई, आजीवन मेरे साथ ये चीज़ जुड़ी रही कि मेरा पहला संबंध डॉक्टर साहब से बना था। डॉक्टर साहब 5 बच्चों के पिता हैं, लेकिन वह जो है एक लड़की जो है अनमैरिड है और वह उनके संपर्क में आती है और उन्हीं को अपना सर्वस्व मान लेती है, इसी मानसिकता के चलते कि यही मेरा सब कुछ है। उद्योगपति होने के बावजूद, आत्मनिर्भर होने के बावजूद वह इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई कि जो है आखिर प्रेम होता क्या है, और इसी एक निष्ठा यानी कि एक पहले के चक्कर में या प्रथम के चक्कर में जो है वो किस प्रकार से पूरी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, यही इस उपन्यास में लेखक ने दिखाया है। और एक रात जो है पलनी गया हुआ है, और पलनी जैसे ही जाता है और एक आवाज़ आती है करुतम्मा को, और वह बाहर निकलती है, उसकी छोटी सी बच्ची उसकी गोद में है, वह उसको नीचे लिटा देती है और बाहर निकलती है तो क्या देखती है, उसे लगता है कि जो है शायद पलनी की आवाज़ है, लेकिन वह देखती है जैसे दरवाज़ा, चांदनी रात है, बाहर निकली है, और बाहर निकलने के बावजूद जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो वह क्या देखती है कि सामने पलनी जो परिकट्टी खड़ा है, और परिकट्टी से जैसे वो खड़ा है वह उससे आलिंगनबद्ध होती है, और उसी समय जो है आलिंगनबद्ध होती है, और उनका जो है इतने दिनों से दबा हुआ जो उसे लगता है कि यही प्रेम है, वह निकल कर सामने आता है, और वो आत्मसात हो जाते हैं, और आत्मसात होते ही होती है तबाही, समुद्र में तूफान आता है, यही दिखाया है, तबाही का मंजर जो है प्रस्तुत किया है। उधर पलनी जो है तूफान आने से पलनी की नाव जो है वह उलट जाती है और पलनी की जो है मृत्यु हो जाती है, और दूसरी तरफ जो है सुबह में लोग देखते हैं कि जो परिकुट्टी और करुतम्मा की जो है लाशें जो हैं वो किनारे पे जो है वो गिरी हुई हैं। एक ऐसा मंजर इस प्रस्तुत किया है लेखक ने, जिससे एक चीज़ निकल के सामने आती है कि हमें ज़रूरत है वास्तव में प्रेम को समझने की, वास्तव में जो है अपनी मानसिकता को थोड़ा और ऊंचा उठाने की, और भारतीय समाज के मध्यम वर्ग की इस मानसिकता का चित्रण चैमीन उपन्यास में लेखक ने किया है, जो जिसकी आज भी प्रासंगिकता है
और जिसको जो है हमें बहुत ही गहराई से मानवीय भावनाओं से भरा हुआ यह उपन्यास है, जो एक मिसाल के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत है।